Okay, so good morning everybody, and once again welcome back in today's class. Today we are on the day number 33, and we were discussing about the ServiceNow scripting. Okay, so yesterday we discussed about that what is customization and what is configuration, and a little bit about the glide record as well. Okay, and now we are going to proceed further on the further classes of this particular scripting part. Okay, so the next thing which we are going to discuss is called server-side scripting classes. We were here and we are going to discuss this. Matlab, when we need something from the database and want to run a query, then we use this particular options. Options तो नहीं बोलूँगा, options is not the right word, but this particular classes. Now the fundamental is this, that these are not the limited classes. There are many more classes like this. Like on the server side, there are many more classes are there. ठीक है, एक मिनट देना जरा. ठीक है. So there are many more classes in the server side scripting. ठीक. So the first class which we are going to be discuss about the glide system. ठीक है. और इसको कॉल करने का तरीका क्या है? GS. GS डॉट. मतलब अगर मैं, क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, इसका मतलब will it run in the background? Script need to be C. ठीक है. और we can use business tool or we can use this thing UI action kind of things. Let's see. Let's go to background. Background. This one. ठीक है. What is syntax for this? GS dot is it means variable lng is equal to GS dot. ये देखो. GS glide system dot, and these are its methods. कि मुझे क्या कॉल करके लेके आना है वहां से. ठीक है. So GS dot is the glide system class. ठीक है. The example they gave is mainly about the user. देखो जब हम when we work in the service now na, and we want to see that is this user has a admin role or not, is this user has a this particular role or not, or this particular access or not. तो हम user से नहीं check करते. Like if I say that Amisha has this role or not, no. In the database, we will check the Amisha's record sys ID, and then from there we check it. क्योंकि नाम चेंज हो सकता है. आज amisha.jan है, maybe tomorrow she say no, I want amisha.j.jan, and then they say no, I want ami.a.jan. So that name can be get changed, but sys ID will never get changed. एक बार अगर system में, if system has been creating this user account, तो sys ID will generated. So in this way we use this thing to get a sys ID of a user. So GS dot get user ID. What we're saying, the logged in user which is already logged in, I want the detail of that particular record. Because what we say that, okay, I want, or as I say that
if you have a ITL role, only then you can see the multiple options here. यहाँ पे if you don't have ITL rule, then you can't see here. But how I can say do you have or you don't have? I'll check the logged in user. The user who logged in, I want to get the detail of that user, and then I will see that what is the sysid of this user, and is this sysid has a ITL rule or not. ठीक है, तो ये सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग है. और लाइक इफ आई गो हियर, लेट्स से बिजनेस रूल. Go here and business rule. And let me create a new business rule kind of thing so that we can see how these classes are working. ठीक, बट ये सर्वर साइड है, ये क्लाइंट साइड नहीं है, तो ये फॉर्म पे नहीं चलेगी आपकी. ठीक, I'll put advance and now G is equal to G. Yes. देखो वही चीजें वहां थी वो यहाँ पर भी आ रही है. Add error message, add message sanitization, info message, no sanitization, kind of a botting and all the things. Add message, app upgrade kind of things. ठीक है, तो ये इसके कॉमन मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो. ठीक, इफ आई गो डाउन लिटिल बिट मोर, दिस वन, गेट फुल नेम, गेट ईमेल आईडी, मतलब कि व्हाट इज सेइंग कि जो यूजर का ऑब्जेक्ट है, bring that in that. So what they are saying, doing like this, gs dot get user, this one, not user ID, user. ठीक है, मतलब कि I want to see a user first name, last name, full name kind of thing, so I can use this particular class. So let's go in the background script, gs dot get user, कि यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट, because it is based on the JavaScript and JavaScript based on the Java and C++ concept, so they are using the object. Now this is my object. अब टेबल नहीं मैं कह रहा हूँ जो लॉग्ड इन यूजर है, जो यूजर है जिसकी बात कर रहा हूँ, bring that part. So now when we have an object, now we will use this as a way to get the stuff. gs dot get, sorry, gs dot get user dot get full name, ये वाला यूजर गेट फुल नेम. देखो इसका यूजर यू कैपिटल है इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है वो. अब देखो हुआ ना, गेट फुल नेम. लेट्स ट्राई दिस. रन हो गई, देखें क्या हुआ इसका. वो सिर्फ रन लेके आया क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया. सो इट डिड नॉट गिव मी एनी रिजल्ट. मैंने आई डिड नॉट से कि इस यूजर का लेके आओ, बट आई से और आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द वे दैट वी कैन गेट द फुल नेम. I want to print a message when the ticket get created, when Amisha get done the payment and that stored in the database, payment confirmation come, then the message should come in the pop-up window kind of thing. Thank you so much Amisha Jain for booking this ticket. अब वो Amisha Jain कहाँ से लेके आएगा? From that user object dot full name से. So if you want to get something from the database from the user perspective, then we have to use this particular class, and this particular class has these methods. Dot get full name, got email, got location, got major ID, got company, sorry, get major ID, get company ID. These things. ठीक है, but they're still saying that this, the purpose we're doing should be use the sys ID.
You should do, or it should work same as a user sys id. ये वैसे काम करता है, sys id में काम करता है, ठीक है. But sys id can be little different because it's a 32-bit character. It's tough to be understand, so they're calling by this method. ठीक है. This is a first class of the server side to get the user information like this. gs.hasRole admin means if I am running this database query, this background script, I am checking gs.hasRole means with this part I am getting the user detail, and if that user, this is another method, has role admin, then he can say or he can do a lot of things. Otherwise तो ना का तो उस सवाल ही नहीं, अगर नहीं होगा तो वो करेगा ही नहीं. But I want to display some message, so add info message like this. I say if gs dot add info message, अंदर मैसेज देना पड़ेगा हमें. And now if you run, background message info hello lng is coming. But if you run this particular code in any of the UI action or any of the business rule, then it will display on the form level. अब बोलो सर फॉर्म लेवल पे तो आपने मना किया है. नहीं, it will display after doing the work in the database. अब database में किसको दिखाओगे? If I say okay, I want to show this error message, but you will say, Atul, to whom you want to show this message? I want to show this message to user. But when the record get updated in the database, तब, उससे पहले नहीं. ठीक है? So we can use these two are the common ways to this particular part on the above table. So these are the common things: get, add message, get info message, citation. ये common है, ये आप बिना किसी class के भी use करो. But these are the server side code, gs dot. Something similar we have in the, what I can say, client side as well. ठीक है, तो उसमें भी है, but different है थोड़ा सा. Now if I go to the next class mainly, ठीक, GS का तो हो गया glide system, date and time. I want the records of a particular date, right? Date and time. So we call this class as a glide date time. And we can use this as the object, and with the object we can use the different methods like this. If a user logged in after 6 o'clock, then I should show a message. But we have to be capture the time. So how we capture the time? With this particular glide date time class is there. And then we can use this glide date and date time class to display our messages or error codes kind of things, or dates specifically. Okay. This particular thing also use when I say, okay, run this job. एक मिनट में I'll come back to you. ठीक है, कहाँ गया? हाँ. Let's say, ठीक है, चलो मैं पहले पूछूं क्वेश्चन. Go ahead. Sir, I'm not clearing the concept of that how we are creating the object. So these are the API, right? No, these are the classes. Okay, so can you explain one more time when you had created gs.lxc equal to? Okay. So what we are doing, Mac, yes, Mac, if I say, let's say I want to make a recipe, I want to make a dish. Okay. I said, guys, we need little cheese. You have to be grade that. We need little hot milk. We need a little cold milk, and we need a mixture of ground flour and the normal wheat flour. These are the 4 different classes for me, or these are the 4 different objects for me. Okay. Now I can use milk to make ice cream as well. I can use a milk
to make a chocolate as well. I can use that milk to make a cake as well. It is totally on the use case what you want to do. So what we're doing, we are just discussing these different objects now. Now in your use case, maybe I want to display username in the message. अब वो कैसे आएगा? Because it's in the database. To call that, we have to use GS class. मतलब अभी we are just doing the different discussion. इसका consolidated use case नहीं है अभी हमारे पास कोई. Use case हम बना रहे हैं कि once Mac do the checkout, done the payment, then he should get a pop-up message or he should get a information message. Thank you, Mac Mishra, for booking your ticket. Your ticket number is this. How I'm getting the Mac Mishra full name? कहीं से तो मैं पिकअप करके लेके आऊंगा ना. मैंने देखा कि मैक मिश्रा इज अ लॉग्ड इन यूजर और उसका लॉग्ड इन यूजर का एक CSID है. I'll go in the database and find out. अच्छा, मैक मिश्रा का CSID क्या है, इसका फुल नेम क्या है, मैक मिश्रा. Bring and show me to me. तो वहां पर ये ग्लाइड जो सिस्टम है ये यूज किया जाता है. That class has been, sorry, that object has been used. In the same manner, we have a date and time. I said that guys, I'm giving you extension for the 3 more days. आज से 3 दिन के बाद. But how my system will know कि आज से 3 दिन के बाद मुझे ये करना है? My system understand only one thing, that is called glide date time. और इसमें I want to add the local days. एक दिन ऐड कर दो, 2 दिन ऐड कर दो, 7 days ऐड कर दो, so that we can add. After 7 days of the ticket creation, a user should get an email. Irrespective of it's a business days or calendar days, but a user should get a email. So these things can be done via glide date time objects or class. Sorry, not object, classes mainly. Clear हुआ? So can you go to the first? Can you go to the first code that you have written on background scripting? This one or? No, the first one that you have written on PTI. Glide system. On PTI, okay, yes. Wait, I'll come. Okay, coming, yeah. Here, okay. Right. So here you have defined the object vr.lng equal to gs.getUser. So getUser is a method, right? That's you defined. GS is a class और getUser इसका method है. और जब मैं वो लेके आता, then I'm saying in that method I want to put full name of that particular user. और full name आने के बाद I want to show a message. So we cannot define the second line you have written. We cannot define like lng.getUser and then again we can do. Because then you have to do lng.getUser. Sorry, no. Why? Because this is a full object. Like in the glide record, we are in the war glide record, we're getting the full table name, but not this is not the case here. We are just declaring a variable, but we are using the actual class to get our details soon. When server say that I'm giving you functionality, you can use your class or method, and then you get the other attributes, then why you want to be use the variable here? We just declare this, yes, that we are using a class and a method. But we can use class.method.attributes name in this way. So then what is the use of creating a variable here if we are not using it? Yeah, technically I have no answer on that particular word. If I say frankly that I was also thinking that why they're not using LNG. Generally they should LNG. Yesterday example we take for the glide classes, then we use the work LNG dot glide record or table name. Then we say LNG dot run query, LNG dot add query, LNG dot this query. But today they're not using it. We can use that way also or not? No. Let's say LNG dot get कर सकते हैं, right? Full name. You can give a try in the business tool.
जब इसका एक बार मतलब क्लियर हो जाएगा ना फंडा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर दैट इट विल वर्क और नॉट नाउ. ठीक है, इफ आई रन स्क्रिप्ट नाउ, नहीं उसने मैसेज तो डिस्प्ले किया बट ये मैसेज डिस्प्ले नहीं किया कि फुल नेम में क्या जा रहा है. देखिए क्या है इसका. अरे इसने तो पूरा डाउनलोड ही कर दिया क्या. बीजी स्क्रिप्ट नहीं, उसने रन किया बट रिजल्ट्स क्या दिया कुछ नहीं है, सिर्फ उसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया. इवन आई एम नॉट श्योर दैट ये एग्जीक्यूट हुआ भी नहीं हुआ इसके बाद. लेट्स से आई पुट वन मोर मेथड हियर. हाँ, हम पुट करते हैं lng डॉट एड info message by lng. लेट्स रन दिस. अगर ये रन हो गया इसका मतलब पिछला रन हो रहा है. देखो नहीं, ये चलेगा ही नहीं ऐसे. It is just showing error. It is showing message till this point. इसका प्रैक्टिकली अगर चलता तो ये भी शो करना चाहिए था, बट इसका मतलब in the server side scripting we can't use variables like this to get our methods. So the only way to call is that class, उसके बाद उसका जो भी वो है आपका मेथड जो है, और उसके बाद जो एट्रीब्यूट आपको कॉल करना है, यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, नॉट श्योर दैट व्हाई टेक्निकली इट्स नॉट बीन डन और क्या लॉजिक है इसके पीछे, सॉरी. Might be I can find someone here because now a lot of technical people are there, so I can find that what is the reason behind that. ठीक है, clear Mac? Yes, sir. Even not clear, but no other thing we have as of now to be see. Let me see. Let me connect with my technical guy, friends here, and we'll update you. ठीक है, Amisha, go ahead. Yes, Amisha. Amisha, you're speaking on mute if you're speaking. Achha, okay. How we'll know that by looking at GS we can say it's a class, or we can say it's a variable, or it's a object, No. it's a method. ना ये वेरिएबल के बाद जो पहले आएगा उसकी क्लास, वो क्लास ही होती है. Okay. और उसके बाद जो आएगा वो उसका मेथड होगा. Method is very clear that it is having a parenthesis and it's a method. Yes. So it will be always a class. So it is nothing like the same concept in Java that if first capital letter hai and then it's a class or something like that. No. Okay. ServiceNow is using the Java और JavaScript concepts, इसलिए वो क्लासेस वगैरह का सिस्टम है, लेकिन क्लासेस की खुद की अपनी है सारी ये. Okay. ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म दे पुट एज ए ग्लाइड सिस्टम की जगह उन्होंने जीएस कर दिया. Maybe if they want they should do it like glide DT, but they keep it like that only. Because if you see here also they're using this thing glide DT dot get display value. अब देखो यहाँ तो उन्होंने ये यूज किया यार वेरिएबल, but Yes. on the above there use the variable. So I have to be checked that why this is but differentiation. Because if the variable is not पूछता हूँ मैं किसी used, से then कल. what is the reason to define it? No? हाँ, to declare it, unnecessary Yes. to declare करना है. Maybe I can say that this is a way that we can initialize the class or something other way. But your question is valid that why we need it there. अगर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं उसको. But if you see this part, here we are using it. देखो ये रहा glide dt dot add display value. But we are unable to call with LNG, na? But that is a glide system class. This is a glide date time class. It is not following the pattern, na? That one class we can use, हाँ, another we cannot. definitely. How we will keep in practice, na? Okay, this can't be used, this can be used. हाँ, ये I have to find out this logic. कि how can I explain you this thing that it should work like this way or not work this way. Okay. ठीक है, we'll check on this part. At least basic clarity should be required that this is a way that it should be used always. ठीक है.
So if you want to work on the date and time, then you can use glide date time class. So I have one more question before Go ahead, Meg, going to please. the. So that Go we ahead. define like we were defining the first letter would be capital, in the middle also when we change the word. At the same way like glide record, glide date and time. At the same way. ये पैटर्न ना आपको nothing to be I can say remember this better. You can use like this, like Same way like get GV is defined as small. But new. Let's say I yes. put in this glide date time. Okay. So it is coming automatically. Click like this. Here is we have written the started with the capital letter G and D and T. We started with this one. See. Right. The first thing you remember that if there is something wrong in your class name, ठीक है, उसका color change नहीं होगा. To differentiate that particular part. देखो ये class name गलत है, इसलिए इसका color change होगा. Now if I write the same thing, ठीक, अब देखो. So this is an indication that this is my right class, this is wrong class. अगर wrong class है उसके methods भी नहीं आपको देखेंगे फिर. Can we say this GS is object of some class get user class because glide DT and glide that time is a class. GS तो खुद एक class है glide system. ये तो उसका आगे method है. ये object. No. This particular GS is an object or a class. This is the class. This is the way to call the glide system class. And glide date time is also a class. Yes. So there is no any synchronization that get user and glide date time में No. G capital है, G small है. We can write anything. हाँ नहीं. This is the way that they define it. The service now define it. Because people say get user, get full name is synchronized. That okay, they are following the camel case pattern. हाँ, camel right. And here glide date time. But I guess you are mixing two classes here. And see, these are not pure code level things. Maybe this is the way that Java also define in the background. See, I might be mixing, but there something should be a pattern, na? Ki acha, this is the way the class is written. This is the way the method is written. This is the way we define the variable. Nice. So if you want to use the method, so now you can say var lng dot. अरे अच्छा उसको भी तो confusion है कौन से वाला कॉल करना है मुझे. Sorry, what I'm saying lng dot add days. अब देखो इसमें भी गड़बड़ है, अदरवाइज ये भी चेंज होना चाहिए कुछ ना कुछ. If you see this part, add days local time glidity for lng new glide date time this दिखा तो रहा है add days 6. Let me see this option. अगर मैं इसको ऐड करके देखता हूँ कॉपी पेस्ट करके, is changing any color or something. If not changing not color, then we are fine. lng dot add date local time. नहीं, it's changing nothing. मतलब ठीक है. This is also correct. This is also correct. दोनों चीजें ठीक है मेरी. So these things, as I say, that these things you will learn from the experience. Ki how to call this class, how to call this class, how to call this classes. ठीक है. As I say that these are not the limited only. 5-6 नहीं है, ये तो बहुत सारी हैं. Go ahead, Misha, you're asking something. Yes. So what is the difference between the class and API? Because as we have discussed at first class, glide record or glide digit, these are the APIs that has already out of the box service now given to call different. Classes, no. APIs are the way to call that particular class. Class says that what you want from me, like date and time. This is the class. Why? It says what type of function you want to do on the dates.
ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वीकेंड्स, वीकडेज क्या निकालने हैं. So like in the CMDB we have a CI classes, right? Right. Will you add network class in the computer class? Nahi na. If I say, okay, can you compare orange and banana? So now that I understand, the relative class we have to call correct. on the So API is something which is the interface between maybe your incident and your glide date. इसके यहाँ तक का है, but उसके बाद what class need to bring is this, and under that what object need to be done, then the next part is there, what method need to be done, there's the next part will be there. अब देखो simple, is the waiter going to be cook food for you? नहीं ना, नहीं, right? कभी नहीं होगा वो तो. Will chef take your order anytime? कभी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि शेफ जो है वो क्लास है और वेटर जो है वो एपीआई है. In my kitchen I have a 10 chefs. A customer give a order for the paneer, let's say kadai paneer. Will it go to the chicken specialist chef as well? नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको पता है वो बनाएगा ही नहीं, उसके पास रास्ता ही नहीं, उसके पास बनाने का तरीका ही नहीं है. It will go only to that class जो वेजिटेरियन में है, और वेजिटेरियन डॉट शाही पनीर को लेके आओ. तो मेरी क्लास क्या हो गई? वेज मेरी क्लास हो गई, डॉट शाही पनीर का जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी मेथड है, उसको मैं लेके आ रहा हूँ. Okay. इसलिए when you work in service now, different classes have been built for the different purpose. If this is not the case, then in the CMDB we don't have any class as well. हम मेन बेस क्लास में CMDB की क्लास में जो है मेन क्लास में सारे काम कर लेते हैं. But to differentiate that part, in our school we have 40 students in a class. Why every student has a roll number? To easily identify, right? Right. नहीं तो अगर रोल नंबर हटा दो तो कोई कॉमन है ही नहीं दोनों में, किसी कुछ सॉरी नथिंग कॉमन इन यूनिक इन दैट. मे बी 2 people with the same name Mac. Mac is very common name. Maybe in your class you have 5 people with the same name Mac. But if those 5 people has a 5 different roll numbers, then easy to identify. So API is used to connect and class to get the actual data. Class.methods to get the actual data. Okay, so it says if you want to work on the date and time kind of object, resolved date, created date, due date, delivery dates, resolution date, SLA dates, उस पे अगर आपको काम करना है, then you have to be use this particular class. You can add the days like this. You can subtract the days like this. Up to you what you want to do. You can do that particular part. Just 2 to 3 examples they'll be giving to get familiar with this particular part. In this, again, more you do practical, more you will learn in that domain. That is the fundamental rule here. सिर्फ मैंने 2 क्लासेस बताई, फंक्शनल बताई, काम हो गया? नहीं. It is 0. If you want to be learned, then you have to be go more deep in that particular part. ठीक है? Got some clarity here? Yes. Now let's proceed to the glide element. Glide element provide methods for dealing with the fields in the glide record object. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो करंट है इसकी बहुत वैल्यू है. ठीक है, I want to do this operation on the current record. अब देखो 2 चीजें हैं.
If I go back here in the service now and open the, let's say I come here, this is the form level. Okay, I come here and I open the incident. Incident and I click on the all. Open incident. If you want to work on the current object, अब यहाँ पे current object कौन सा है? Can you tell me? नहीं है, क्योंकि मैं इस पे भी काम कर सकता हूँ, मैं इस पे भी काम कर सकता हूँ, मैं इस पे भी काम कर सकता हूँ. करंट ऑब्जेक्ट मेरे पास कोई नहीं है. बट ऑन द फॉर्म लेवल आई हैव दिस करंट ऑब्जेक्ट कि हाँ इसी पे काम करना है. So if you want to do this work on the ongoing record, on the open record, then we use this particular class, glide element. और यहाँ पर यूज होता है current. This is the only point due to which we did not doing our ServiceNow to ServiceNow integration. Because when we say ServiceNow to ServiceNow integration, I want as soon as user click on a button, the incident should get credited in the other system. भाई पहले क्या होता था? How the telegrams work? Anybody know? पहले ये था ना कि in the villages postman comment से आपके घर से तार आया. Anybody try this telegram option anywhere in your life? या आपके पापा मम्मी दादा दादी ने कभी किया हो? Anybody? Yes, so what they do? हाँ क्या रहता है हर्षल? So it's like a emergency type of message रहता था. हाँ बट मैसेज कैसे बनता है वो? कैसे जाता है मैसेज? स्पीड पोस्ट से होता था सर. अरे कमाल हो गई. टेलीग्राम्स ये जिसको हम हिंदी में तार भी कहते हैं, दैट इज अगर इमरजेंसी तो फिर स्पीड पोस्ट कैसे होगा? स्पीड पोस्ट तो होता ही था पहले कुछ. तो वैसे वही टाइप का था सर, उसको पोस्ट कार्ड लगाते थे और वो फटाक से जाता था. नहीं लेकिन कैसे? वो उसको आइडेंटिफाई करते थे, वो पोस्ट कार्ड लगा के, नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड लगा के. बट फिर आगे अब मान लो मुझे यहां से, आप जलगांव में रहते हो, ठीक है? जलगांव से पुणे का रास्ता है 8 घंटे का, लेट्स से, ठीक है? यू हैव इमरजेंसी इन द मिडनाइट और लेट्स से 7 o'clock इन द नाइट, इवनिंग, ठीक है? लेकिन you want to send some emergency message to your relative in the Pune. If you go to the post office and you say कि मुझे तो टेलीग्राम भेजना है, वो बोलेंगे हर्षल today's post is already out, कि 5 बजे सारी डाक चली जाती है, राइट? आपके दोबारा तो कोई बंदा भेजेंगे नहीं वो. So what my knowledge says in the telegram, it use some wire lines. So from your source, the postmaster or that particular executive do some coding kind of things. He press some buttons that get transferred to the another post office, and that postman or the postmaster decode that one and then put the message to your family. This is what my knowledge says. मतलब मुझे लगता है कि ऐसा ही था, क्योंकि मैंने एक या दो जगह कहीं देखा ऐसा. This is what called the telegram. जैसे टाइपराइटर होता है ना, वैसा कुछ उनके पास, they have some machine. So they coded and then the postmaster decoded and then they give to the destination. ठीक है? So in the same manner, if you want to work on the current record, so we are talking about integration. Integration says as soon as I click send on my WhatsApp message, Amisha should get a message immediately. Or as soon as Amisha send any message, I should get a notification. Yeah, I should get that message in my system that yes, it done. So when we do the integration, we use the current object. कि मैं इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं, मैं इसका डेटा भेज रहा हूं, आप इसका डेटा ले जाओ और जाके स्टोर कर लो. I will show you the live example for this one when we do ServiceNow to ServiceNow integration. Because to understand this part, first I will show you the static integration.
जो आपको बोलेंगे नहीं सर ये तो होने नहीं चाहिए, हमें तो करंट चाहिए, हमें तो लेटेस्ट चाहिए, हमें तो अब रियल टाइम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रियल टाइम। अब जैसे नाउ यू सेज, Marshall says, sir, give me some real time example so that we can understand. अब रियल टाइम क्या होता है, किससे तो है नहीं कि आई कैन ब्रिंग सम 10 years 20 years बैक दादी नानी की कहानी सुनाओ। रियल टाइम तो मतलब ये होता है कि सर आप बताओ, आप जिस अकाउंट में हो, जिस कंपनी में हो, यू वर्किंग ऑन इन विच प्रोजेक्ट, टेल अस दैट एक्सपीरियंस, वो आपका करंट एक्सपीरियंस चल रहा है। सो इफ यू वांट टू डू एनीथिंग ऑन द करंट ऑब्जेक्ट, देन वी यूज करंट इज दैट पर्टिकुलर टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। और उसके ऊपर अगर आपको किसी एट्रीब्यूट पे काम करना है, देन यू कैन यूज करंट डॉट स्टेट डॉट चेंज टू। अब 7 क्या है, स्टेट का डिजिट नंबर। इट कैन बी अ क्लोज और इट कैन बी कैंसल स्टेट, कि एज सुन एज एनी यूजर changes the state of a incident or changes the state of a problem to the cancelled state, I want to display a message, वो यहां से हो जाता है फिर, ठीक है, और वो करंट रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सो हाउ टू यूज दिस पार्ट, वी हैव अ कंप्लीट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जब हम जावास्क्रिप्ट अपना ये यूआई यूआई एक्शंस करेंगे, then we will come to know that how this can be used, these classes can be used. Current dot can create, जो यूजर लॉग्ड इन है चेक करो कि उसके पास क्रिएट के राइट्स हैं, अगर है तो शो कर दो मैसेज yes you can create, if no then display the message sorry you're not allowed to do any changes here. This is what the current work, and this is the part of the glide element. Now Amisha has another question, अतुल इसमें तो उसने ग्लाइड एलिमेंट भी यूज नहीं किया, ना जीई यूज किया, ना ग्लाइड एलिमेंट यूज किया, तो सारा काम खत्म करके करंट पे ले गया। This is the way that Java has been defined, possibly. But there must be some pattern to write, to understand, to define. But यहाँ तो कोई pattern नहीं दिखाई दे रहा. So simply to understand, if you want to work on a current record, sorry, or ongoing record, use the current dot method. Then you can do your part. And these are the very limited classes which this book says. Otherwise, there are a lot of more classes like glide aggregate. Aggregate is like an extension for the glide record, but in this part, glide record tends to be database object, whereas glide aggregate deals in the count and number. Show me the incident created in a month. Now, if I show you this thing, let's say we are here. We have 3,550 tickets. Tell me how many tickets created in a 1 month. अब आप क्या करोगे 1 month के लिए? सर काउंट करेंगे उसको, राइट? यही करोगे ना? Sir, what we'll do? We'll go here. We'll put a condition here and created on, let's say on last week. Run. तो मतलब सिस्टम ने क्या किया? टोटल 33 records मिला के दिखा दे. Because we are on the list view, so it's showing the data as well. But how this will be getting updated? This is your glide aggregate. इसको कॉपी करते हैं. Copy query. Let me show you here. JavaScript GS dot beginning of the last week and then JavaScript GS dot end of the last week. आ गया आपका GS glide system आ गया. Beginning of the last week and end of the last week. अब अमीशा कहेगी सर डेट क्यों नहीं लिया उसने?
मैंने कुछ बोला सुने, मुझे इस डेट का चाहिए, मैंने कहा लास्ट मंथ का चाहिए, नाउ चेंज दिस क्वेरी, क्रिएटेड यस्टरडे। अब देखते हैं क्या देता है। कॉपी क्वेरी, कम हियर, GS dot end of yesterday, end of yesterday। अभी भी ग्लाइड सिस्टम पे काम कर रही है, डेट पे जा ही नहीं रहा। नाउ लेट्स सी, लेट मी चेंज द डेट अगेन हियर, created between, let's say between 4th of December till 6th of May। अब करते हैं रन इसको, एंड कॉपी क्वेरी, देखो आ गया GS डॉट डेट जनरेटर। अभी भी ग्लाइड सिस्टम यूज करे, डेट एंड टाइम यूज नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज date and time will be used if you want to add something in the dates, add number of days, number of weeks, then you can use. Ab totally it's internal query. And one more thing, sometimes you see the code written in the business tool or this part. What people do on the filtration, that someone says I want a button here, when I click on this button it show the latest records of the last 6 months। तो वो क्वेरी यहां से बनाते हैं फिल्टर से, और फिर ये कॉपी करके उसमें कोड में डाल देते हैं कि बाकी सब हटा दो, ये GS लगा दो, GS डॉट डेट, और चल जाएगा काम मेरा। So we learn the queries or we can copy the query from here as well। ठीक, so now glide aggregate कहाँ गया? It work on the numbers and counts। अगर काउंट 5 से ज्यादा है तो एरर मैसेज शो कर दो, या फिर हर काउंट के लिए मुझे बता दो काउंट 1, काउंट 3, काउंट 3, काउंट 4 like this। So let's do this thing। What we're doing here, let me go back here on this part। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हमने काउंटर वेरिएबल लिया एंड वी आर डूइंग द एग्रीगेट ऑफ द इंसिडेंट टेबल पे जितने रिकॉर्ड्स हैं। काउंटर डॉट ऐड एग्रीगेट काउंट किया कि जितने हैं उसको काउंट कर दिया, और उसके बाद क्वेरी करना शुरू कर दिया। पहला है, फिर दूसरा है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, और प्रिंट करवाना उसको कैसे, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। नाउ रन द स्क्रिप्ट, लेट्स सी। इसने डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि हमने कोई वो मैसेज नहीं प्रिंट करा ना, एड इन्फो मैसेज नहीं किया हमने कुछ ऐसा। ठीक है, लेट ट्राई टू डू। GS dot add info message, we'll see। उसने मैसेज प्रिंट किया इको हर बार, काउंट होता गया, वो प्रिंट करता गया। बट समटाइम पीपल से नो नो, आई वांट count 1, count 3, count 4, count 5 and message आना चाहिए। This is the incident number 1, this is incident number 2, incident number 3। So we have to do little bit more coding on the info message only, and then we get a count। मतलब आपका पास count आ गया number of incidents, then say this one, maybe like this, number of incidents let's run। अरे यहाँ रन क्यों नहीं करके दिखा रहा ये? हमको काउंट डिस्प्ले करना पड़ेगा। हाँ, मतलब हम काउंट डिस्प्ले नहीं कर रहे, वो सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। मतलब again I don't know that much coding as well, so I'm not able to print that part, but intention is that if you want to show the aggregates kind of things, then you can use the aggregate class। इसमें आप काउंट कर सकते हो, सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज सब कर सकते हो। This thing you are using in the reporting as well।
वापस जाता है ना फंक्शन में, उसमें ड्रॉप डाउन में सम कर दिया, काउंट कर दिया, वो कहां से आता है? हाउ रन इन द बैकग्राउंड? दे यूज these classes only. Don't think if on the reporting I'm going and click on the run button, it will run with the magic. No. In the run button, we have a code like this only. But definitely that will be very complex code and very collaborative or integrated code with each other classes. But ये काम तो वैसे ही कर रहा है ऑटोमेटिक, मतलब बैकएंड तो यही है सारा का सारा. ठीक. Now if we say sorry. Wait, we were here. Glide aggregate, glide aggregate is the last class which this is. Okay. Now to say this is the thing which you want to do on the server side. Now if you want to do on the client side, form level पे, मतलब कि as let's say Amisha or Harshal or Rituja was booking a ticket. They put their kid date of birth, who is less than 5 years. As soon as they enter the date, they get error message. Hello, Misha. This is not a valid date of birth. The kid should be more than 5 years. Now, how the Misha is coming? How the Misha name is coming? Database में तो record गया ही नहीं अभी तक. So to do that part, we have a different class for the same thing which we did in the glide in the server side for the client side as well. ठीक है, तो यहाँ पर वो है, और ये क्लास होती है g_form, glide form. अब glide form अगर आप यहाँ करोगे ना, यहाँ काम नहीं करेगी g_form. क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड जो ये स्क्रिप्ट्स होती हैं, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स होती हैं, सर्वर पे काम करती हैं. और जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज फ्रंट एंड, फॉर्म लेवल पे जो बात कर रहा हूँ. तो इसके लिए मुझे या तो क्लाइंट स्क्रिप्ट निकालनी पड़ेगी. सो लाइक दिस वी कैन डू दिस वे. स्क्रिप्ट ठीक. एंड यहां पर मैं उसको फिर, क्योंकि ये क्लाइंट साइड, ये क्लाइंट स्क्रिप्ट्स हैं, एंड दिस क्लास इज आल्सो बिलोंग टू द क्लाइंट साइड. g_, देखो यहाँ आ गई आराम से फॉर्म डॉट, ये आ गए उसके मेथड्स. So if you are doing work on the client's form level and you want to display some messages, you want to display some username, then you can use the g_form class. Same way, वेरिएबल डिक्लेयर करो और वेरिएबल से के अंदर स्टेट की वैल्यू जा, और देखो अब इन्होंने भी यही किया g_set वैल्यू. अच्छा, इसमें अब क्या है कि आई वांट, मतलब ये गेट वैल्यू सेट वैल्यू ना बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर. I want to display the username. I want to display the caller name in the message, info message. अब caller name तो database में है ही नहीं अभी तक. If I say I'm creating a new incident, ठीक है. I open the record और मैंने नाम डाला भाई भाई, ठीक है. Now this is a VIP. I want, if the caller is a VIP, then I should get an immediate pop-up message. Hello, this name, and then message. Because this record is not inserted as of now in the database, then how we can use? We can use the g_form.get value. Means to get the value of that particular field. So what we say, get value, get underscore value of this call_id field यहाँ पर ब्रैकेट्स में, कि उसमें जो भी वैल्यू है वो लिख आओ. एंड सेट वैल्यू इफ यू वांट टू ओवरराइड दैट वैल्यू, नहीं उसको भाई भाई हटा के अमीशा जैन कर दो, अमीशा बैच15 डाल दो उसमें. सो दैट इज अ दिस वन. अब ये इफ यू सी आई एम द न्यू स्टेट नाउ, राइट. इफ आई फिल द असाइनमेंट ग्रुप, ठीक,
ये कर दिया. Now if I submit it, ठीक. Now what is going to be happen? अच्छा इसका वो नहीं है क्या? रुको, we'll show you one more method if it work. ठीक है ये, and let me put assign to as well. ठीक है, रुको एक नया मेल लेते हैं. ये लेट्स सेव दिस. देखो अभी चेंज कैसे हो गया स्टेट, बिकॉज ऑन दिस बटन क्लिक वी हैव अ सेट वैल्यू मेथड एज वेल. ये वाला कि स्टेट की वैल्यू को 6 कर दो, 5 कर दो, 4 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो. गेट और सेट की बहुत वैल्यू है क्लाइंट साइड में, क्योंकि इसके बिना कुछ काम ही नहीं होता. या तो मैं लेके आऊंगा वैल्यू, क्या मैं वैल्यू शो करूंगा. लेट्स से Amisha is booking a ticket and she mentioned the age of her daughter, 31st of October 2016. When she tab out from that field, there's another field get populated called the age, और उसमें age आ गया 8 years. कैसे? On the tab out, there's a first thing has been written, the calculation, and second thing has been written, set value. ये वाली कि वहां पर इस वैल्यू को सेट कर दो जाके. This way we do get and set value. Yes, Amisha, go ahead. No, when you said that there was last week methods beginning from last week, end of the last week, can we see that methods definition? Because obviously they will be also calculating na, that 7 days from now we have to calculate. You can see, but I guess for that you have to go somewhere, multiple clicks or something is there. But if you want to see that how it's be calculating, the core code you can't see. कि वो जो मतलब इंग्लिश में कैसे लिखा है, last week of end of the last week or the beginning of the last week we नहीं, something वो has नहीं. calculated na, because from today last week it's नहीं. not that 1 2 3 4 5 6 7. Okay, नहीं, that is a pure code, core code. I doubt कि we can see that particular part. Okay. ठीक है ना. बट अगर देखो, these are two things. There is a concept called the open source. ठीक है, ओपन सोर्स में क्या होता है, ये टूल है, अपना अकाउंट बनाओ और उसको एक्सेस करता रहो किसी की जगह से भी जाके. ओपन सोर्स टूल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है बिना किसी फीस को पे किए. ठीक है. और दूसरा क्या है, लाइसेंस्ड. कल हम सारे 2-3 फ्रेंड्स मिले तो ऐसे कुछ जेनेटिव वे पे बात हो रही थी. अब चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी 3 इज अ फ्री, कोई भी यूज कर सकता है. लेकिन चैट जीपीटी 4 और चैट जीपीटी टर्बो, मतलब मेरा दोस्त इज वर्किंग ऑन दैट डोमेन, ही सेड इट इज अ पेड. $25 लगता है उसको यूज करने का, 1 महीने का शायद उसका सब्सक्रिप्शन है. अब बोला नहीं यार इतना तो खर्चा मैं नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना है. तो ही फाइंड आउट सम अदर ओपन सोर्स टूल कि जहां से मैं ये एपीआईज या ये अपना जो एलएलएम से उनको कॉल कर सकूं, यूज कर सकूं और अपना मैं बिल्ड कर सकूं कुछ. तो ये कोर कोड है, बिल्कुल प्योर कोड है. कि कहां से आ रहा है नहीं पता, हाउ दे डिफाइन नहीं पता. बट यस, सर्विस नाउ टेकिंग दिस वैल्यूज कि लास्ट वीक से इस वीक के बीच में लेके जाओ, तो ये दे हैव चेंज दैट इन द सिंपल इंग्लिश एंड द ब्रिंगिंग एंड शोइंग टू अस. ठीक है, तो ये वो फंडामेंटल है हमेशा. ठीक. So now if you want to work on the form level, then g underscore form is the class you have to be used. Get value and the set value are the two methods which you can use. Again I'm saying these are the client side classes, तो ये आपके business tools पर या आपके UI actions पे run नहीं करेंगी. It will only work on the client scripts or the UI policies.
ठीक है. Now if I go a little bit forward, set mandatory. अब मेरे को I want to make this field as a mandatory. ये किसने बनाया? U underscore previous state. तो ठीक है, जिसने बनाया होगा. ठीक है. I want to make this field mandatory. अब ये कहाँ है? फॉर्म पे है. Then I have to be use this method, set mandatory. Get value, set mandatory is another method. Then g.form set display. Display is for the this thing. You want to show the value or you want to kind of keep it as a blank value. Assign to false. कि assigned की value खाली कर दो. Display नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी. We can use add hide as well if I'm not wrong. ये सारे UI policies के पार्ट हैं. Mandatory, read only और hide. उसी के पार्ट है सारे के सारे ये. ठीक. So different classes, मतलब क्लास एक है but different methods are there to do your work. So if you read this chapter as I already told, then you get a little bit more clarity in that particular part. ठीक है, अब देखो set read only. मुझे इस फील्ड को read only करना है so that nobody can enter any value. I can do the same thing with the UI policy, mandatory, read only, or this thing, hide and this thing. I can do it via UI policy, but as I said in the beginning, if you're a developer, you will do by that way. So you can do this thing, get set value. ठीक. So these are the few, what I can say, not few, one class of the client side scripting. ठीक है. अब second thing है user पे खेलना है अगर मुझे. Now we have to do the user level as well. And I say when you want to be work on the user level, always work on the CSIDs. User के नाम पे कभी मत करो, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है. And same thing we see for the user. क्या था उसमें? If I want to work on the user part, on the server side scripting, gs.getUserID and then gs.getUserID dot, you can use your full name, email address, manager name, manager ID, you can use that particular part. और यहाँ पर if you want to work on the form level, then you have to be use g_user class. आपको ये class use करनी पड़ेगी. And this class again has a few methods. ठीक है. What they did, they say go to user table and get the user ID. और उस user ID का sysID लेके आओ और आप इस put in this particular variable. ये user ID का मतलब ये नहीं कि अमीशा जैन या अमीशा बैच 15 लेके, नहीं. अमीशा बैच 15 का जो यूजर का जो sysID है ये वो लेके आएगा और यहाँ डाल देगा वेरिएबल में. So that now you can do any operation on this particular part. तो देखो अगर इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो g.user get full name, जो उसने मेथड शो करके दिखाया मैं यूजर नेम को, लॉगिन यूजर को जो मुझे डिस्प्ले करना है. आई नो. अब देखो इफ आई से इन दिस पार्ट इट इज अ भाई, but what is the actual name of this particular caller? Its caller name is, or let's say I want to display this thing, Munna Bhai 720. I want to show the display user ID in the error message. तो मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा. Logged in user plus name, get full name. नहीं, I'll say get user ID क्योंकि मुझे तो user ID डिस्प्ले करना है. ठीक है. When on Monday when we start this part client side or the server side scripting, then we will use these classes one by one. कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे ताकि वो क्लियर हो कि हम क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. ठीक. This one because it has a very limited. अब देखो यहाँ पर भी है और वहां पर भी था हैज रोल. वहां पर क्या था? करंट डॉट राइट, और यहाँ पर जीएस यूजर डॉट हैज रोल. बट इसके लिए जीएस यूजर क्या है, मेरी क्लास है, उसके लिए पहले आपको यूजर आईडी निकालनी पड़ेगी. यूजर आईडी से आपको देखना पड़ेगा कि उसका रोल क्या है. अगर उसके पास आइडल रोल है
then fine. अगर iterable नहीं है, then you can't proceed further. तो ये, and few more classes they have given. Means these are the example. Glide record का example है, aggregate का example है इसमें. Then you will find something on the user records as well. ठीक है. If I say practically, this thing now you have to be read. ताकि जब हम Monday को अपना next class शुरू करेंगे, then I'll go for the client side scripting. Then I can say, okay, so tell me the class name for this one. So हमने वो सामान इकट्ठा कर लिया, like as I said in the beginning, कि hot milk, cold milk, we need little bit rice, we need little sugar. हमने वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया. Now the only thing is that we will learn. You want to cook with in everybody's presence, that is a client side scripting, or you want to cook when nobody is there, that is a server side scripting, or you want to cook it and you can bring it to the office, that is a one thing, that is server side scripting. Okay, so the recommendation and the homework is that please read this part up to these many pages. बताता हूं मैं अभी आपको कहां तक करना है. यहां तक इसके समरी तक पूरा कर दो. और 135 पेजेस के, मतलब कि if you read this book as a very basic and easy English to be understand, fancy नहीं है, heavy words नहीं है इसमें, कि नहीं तू समझ नहीं आ रहा है क्या इंग्लिश लिखी है, कैसे हो रहा है, वो वाला यूज केस नहीं है यहाँ पे. और इंटरेस्टिंग भी है. If you read now, you will get a little bit more knowledge on that particular part. ठीक है, clear? Doubt, question and clarification. So when we were using the glide element, then where you had used current dot create. So what do you think? हाँ, current आप यूज करते हो जब आप when you want to validate the particular record, कि जिस पर मैं हूं उसके बारे में बताओ. और glide record हम यूज करते हैं when we want to do the operation on the table level completely. कि इस टेबल में से I want to get 5 records, 10 records और priority is the 1, priority is 2, urgency 1, urgency 2, तब हम glide record यूज करते हैं. Okay. तो मैंने कहा ना कि मतलब मेरा जितना नॉलेज है, I am able to give you that much only, and you have a valid rights that technically you need to be get understanding, but I'm not the right technical person who can guide you. So if you like you're putting this question that why it's not working with LNG variable, why it's working with the glided, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि why? Is it something like expected behavior of the JavaScript only? Yeah, it is something a service now has changed, or something else is there. ठीक है, clear? Yes. Doubt, question and clarification. Good. Okay, let me stop recording and take quick attendance.